स्वामी समर्थ। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार स्वामी भक्तांनो, जर हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचला असेल तर हे समजून घ्या की ही कोणतीही योगायोगाची गोष्ट नाही, तर ही तुमच्यावर स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा दृष्टी आहे। स्वामी माऊलींनी तुमची या मंत्रासाठी निवड केली आहे, कारण आज आम्ही तुमच्यासाठी एक अद्भुत चमत्कारिक असा मंत्र घेऊन आलो आहोत। हा मंत्र केवळ त्याच भक्तांना ऐकायला मिळतो ज्यांच्यावर स्वामी माऊलींची कृपा दृष्टी आहे। प्रिय स्वामी भक्तांनो, आज जर तुम्ही हा मंत्र ऐकलात, तुमच्या जीवनात तुम्ही सुख, समृद्धी, ऐश्वर्य, धनसंपत्ती आणि वैभवाचा अमृत वर्षा होईल। हा मंत्र ऐकताच तुमच्या नशिबाची दरवाजे हे उघडले जातील। या गोष्टी तुम्हाला अपूर्ण वाटत होत्या त्या पूर्ण होतील, अडथळे नाहीसे होतील, जीवन हे आनंदाने परिपूर्ण होईल। म्हणूनच प्रिय भक्तांनो, या मंत्राकडे चुकूनही दुर्लक्ष करू नका। ही संधी तुम्हाला पुन्हा मिळेलच असे नाही, तुम्हाला फक्त हा मंत्र संपूर्ण 108 वेळा ऐकायचा आहे आणि मग पहा स्वामींच्या कृपेचा चमत्कार तुमच्या डोळ्यांसमोर घडताना। तर मग भक्तांनो, तयार आहात ना स्वामींचा आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी? तुमचे उत्तर होय असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये होय स्वामी समर्थ माऊली असे टाईप करा। स्वामी माऊलींच्या कृपेमुळे तुमच्या जीवनात अमूल्य परिवर्तन घडणार आहे। त्यामुळेच प्रिय स्वामी भक्तांनो, आपल्या या आध्यात्मिक माहिती YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि शेजारील बेल आयकॉनचे बटन प्रेस करा। स्वामी माऊली तुमच्या सदैव पाठीशी उभे राहतील। भक्तांनो, आजचा हा दिवस तुमच्या आयुष्यात सर्वोत्तम दिवस ठरू शकतो, कारण तुम्ही शुद्ध अंतकरणाने आणि निष्ठेने व भक्तिभावाने हा मंत्र ऐकला तर तुमच्या आयुष्यातील धनसंपत्ती व गुप्त धनाचे दरवाजे उघडतील। होय भक्तांनो, हा मंत्र केवळ साधा सुद्धा मंत्र नाही, हा एक दिव्य शक्तीचा स्तोत्र आहे जो तुमच्या सर्व अडचणी व संकटाचे निरसन करू शकतो। स्वामीच्या कृपेने तुमच्या आयुष्यातील आजचा हा दिवस शेवटचा दुःखाचा दिवस ठरू शकतो, कारण शुद्ध निर्मळ मनाने हा मंत्र ऐकला तर श्रीमंत होण्यापासून तुम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही। अशी मान्यता आहे की ज्या भक्ताने संकटाशी झुंज देत असतो त्यांनी हा मंत्र जर मनापासून ऐकला तर त्यांच्या जीवनातील सर्व दुःखेही काही दिवसातच नाहीशी होतात। प्रिय स्वामी भक्तांनो, हा मंत्र इतका प्रभावी व शक्तिशाली आहे की हजारो लाखो भक्तांचे जीवन या मंत्राने बदलले आहे। त्यांना गुप्तधन प्राप्त झाले, ऐश्वर्य लाभले व त्यांचे श्रीमंतीचे दार उघडले। तुमच्यावरही कर्जाचा डोंगर आहे का? आर्थिक संकटांनी तुम्ही देखील ग्रासले आहात का? धनप्राप्तीसाठी तुम्ही गेली कित्येक वर्ष प्रयत्न करत आहात पण यश मिळत नाहीये का? तर भक्तांनो, आज हा मंत्र ऐका आणि अनुभव घ्या। स्वामींच्या चमत्कारांचा प्रत्यक्ष अनुभव तुम्ही पाहाल। प्रिय भक्तांनो, तुमच्याकडे आलेला पैसा हा जास्त काळ राहत नाही का? तुम्ही कितीही मेहनत करून पण माता लक्ष्मीची कृपा तुमच्यावर होत नाही का? स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद मिळत नाही का? हाती घेतलेले काम अपूर्ण राहते का? कोणत्याही कार्यामध्ये तुम्हाला यश मिळत नाही का? नोकरी, उद्योग, व्यवसायात तुम्ही नेहमी अपयशी होत आहेत का? जर होय असेल तर हा मंत्र फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठीच आहे। हा मंत्र तुमचे संपूर्ण जीवन बदलू शकतो। म्हणून भक्तांनो, हा मंत्र तुम्ही चुकवू नका। स्वामींच्या कृपेचा महासागर हा तुमच्यासाठी खुला झाला आहे। हा मंत्र केवळ साधा सुद्धा मंत्र नाही, तर तो एक अद्भुत शक्तीचा महास्तोत्र आहे। पौराणिक शास्त्रामध्ये या मंत्राचे महत्त्व अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे। जिथे स्वामी समर्थ महाराजांचा वास राहतो
तिथे आपोआप सुख, शांती, समाधान, धन दौलत आणि संपत्ती याचा अपार वर्षा होत असतो. तुमच्या कुटुंबात, घरात किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी जर या मंत्राचा उच्चार किंवा श्रवण केले गेले तर तिथे अचानक संपत्तीचा वर्षा होऊ लागतो. हजारो भक्तांनी या मंत्राचा अनुभव घेतला आहे आणि त्यांच्या जीवनामध्ये अनपेक्षित धनलाभ झाला आहे. प्रिय स्वामी भक्तांनो, जर तुम्हालाही स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेचा आशीर्वाद हवा असेल तर फक्त तुम्हीच हा मंत्र संपूर्ण 108 वेळा ऐकावा. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मंत्र ऐकण्या अगोदर कोणतीही शंका मनात आणू नका. जर तुम्ही शंका घेतली तर मंत्राचा लाभ होणार नाही. म्हणूनच निर्मळ आणि शुद्ध मनाने संपूर्ण 108 वेळा हा मंत्र तुम्ही श्रवण करा. तुम्ही रोज नित्यनेमाने हा मंत्र ऐकल्यानंतर तुमच्या जीवनात धन दौलत आणि संपत्तीची गंगा वाहू लागेल. तुमच्या आयुष्यातील दारिद्र्य, संकटे ही या मंत्राने नाहीशी होतील. पण प्रिय स्वामी भक्तांनो, हे सिद्ध तेव्हाच होईल जेव्हा तुम्ही हा मंत्र दिवसातून एकदा तरी नित्यनेमाने ऐकाल. म्हणून आता तुम्ही ही संधी गमावू नका. स्वामींचा सुवर्ण योग हा तुमच्या हाती आला आहे. भक्तांनो, तुम्ही जेव्हा आर्थिक संकटात असता व तुम्हाला नितांत पैशाची गरज असते तेव्हा तुम्ही हा मंत्र 108 वेळा श्रवण करा. तुम्हाला हा मंत्र अपार धनसंपत्ती देऊ लागतो. हा मंत्र म्हणजे स्वामी समर्थ महाराजांचे थेट आशीर्वाद आहेत. संकट काळी धावून येणारे, अशक्य ते शक्य करणारे श्री स्वामी समर्थ महाराज तुमच्यावर धनसंपत्तीचा वर्षाव करतील. भक्तांनो, लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही खरंच अडचणीत असता, जीवनात संकटाने वेढलेले असता, तेव्हा जर हा मंत्र ऐकला तर तुम्ही या मंत्राचा चमत्कारिक अनुभव स्वतः अनुभवाल. हा मंत्र केवळ आध्यात्मिक उन्नतीसाठी नाही तर तो मानसिक आणि शारीरिक अशा अनेक समस्यांचे समाधान करणारा आहे. जर तुम्हाला पैशाची कमतरता कधीही जाणू नये असे वाटत असेल तर आज आम्ही तुम्हाला स्वामी समर्थ महाराजांचा महाशक्तिशाली, चमत्कारिक आणि प्रभावी मंत्र तुम्हाला आज ऐकवणार आहोत. या मंत्राने तुमचे आयुष्य वैभवशाली व संपत्तीने परिपूर्ण होईल. शास्त्रांमध्ये स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की जो भक्त शुद्ध अंतःकरणाने हा मंत्र श्रवण करेल त्याचे आयुष्य कायम आनंदाने भरले जाईल. या मंत्राच्या प्रभावाने तुमच्या मनातील सर्व चांगल्या मनोकामना लगेच पूर्ण होऊ लागतील. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता आजच्या या पवित्र स्वामी समर्थ माऊलीच्या मंत्राला सुरुवात करूया. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः. ओम श्री
अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट
अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी
समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी
स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी
स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री
स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी
स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ
महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराजाय नमः। ओम श्री अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ